Hello and welcome to Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I am Vishaka Thakur. The virtual digital asset market has gone parabolic throughout this week, with price of Bitcoin, the largest cryptocurrency by market capitalization, piercing through $30,000 levels for the first time since April. The optimism around spot BTC-backed ETF products helped revitalize price. VDAs have been going through a crisis of confidence, but recent filings for spot Bitcoin ETFs have helped energize crypto markets. Bitcoin price has gained more than 20% since BlackRock, the world's largest asset manager, applied to list a US spot Bitcoin ETF. Invesco, WisdomTree, and Valkyrie too initiated steps to float ETFs. Analysts say big institutions partnering with crypto is likely to be a catalyst for Bitcoin for the foreseeable future. TradeFi will take advantage of regulatory pressure on crypto to unveil new digital asset initiatives, they added. Meanwhile, the growing BTC dominance also resulted in the token outperforming the altcoin market. तो यहाँ ये अच्छी खबर है पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए कि हम काफ़ी टाइम से देख रहे थे जो बिटकॉइन है वो कहीं ना कहीं $25,000 और $28,000 के बीच में ही ड्विंडल कर रहा था। तो उस रेजिस्टेंट लेवल को ब्रेक करते हुए अब बिटकॉइन ने अप्रैल के बाद अब फिर से $30,000 लेवल के जो मार्क है उसको टच किया है। एंड हमने देखा ये कि बिटकॉइन की मूवमेंट के हिसाब से बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी मूव करते हैं। तो यहाँ बिटकॉइन में हम एक अपसर्ज देख रहे हैं, जैसे कहा कि 20% गेन भी किया उसने जब से कि ब्लैक रॉक ने अपना स्पॉट बिटकॉइन ETF फाइल किया है, क्योंकि वो लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है। तो फर्क पड़ता ही है जो भी ब्लैक रॉक जिस तरह के डिसीजन अगर लेता है तो एक मार्केट में भी वैसा सेंटिमेंट बनता ही है। क्योंकि ब्लैक रॉक के बाद के स्पॉट बिटकॉइन ETF फाइल करने के बाद हमने देखा इन्वेस्को, वल्केरी एंड विजडमट्री जैसी कंपनीज ने भी जो है वो ETF के लिए फाइल किया है। तो यहाँ बिटकॉइन में हमने अपसर्ज देखा, तो बाकी ऑल्ट कॉइन्स में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी तेजी आ रही है। बिल्कुल। मूविंग ऑन, Bitcoin's market capitalization is once again larger than that of other cryptocurrencies combined, according to data from TradingView. The site's BTC dominance metric rose above 50% on 19th of June for the first time since May 2021. Bitcoin dominance last near the 50% mark in June 2022 as the entire crypto market cratered on news of persistently high inflation in the United States, leading to aggressive monetary tightening from the Federal Reserve. So Bitcoin is up 17% since last week after BlackRock filed for a Bitcoin spot ETF, for which investors are optimistic may receive unique approval from the SEC. तो यहाँ पे सारी क्रिप्टो करेंसीज एक तरफ और बिटकॉइन एक तरफ, क्योंकि एक डेटा आया है ट्रेडिंग व्यू की तरफ से। तो देखा जाए तो सभी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है उनकी हम मार्केट कैपिटलाइजेशन मिला लें और बिटकॉइन की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो कई ज़्यादा है। और एक बार फिर से अपना जो 50% डोमिनेंस है मार्केट के ऊपर वो बिटकॉइन ने रिक्लेम किया है। तो इसके साथ अभी जो ब्लैक रॉक की आपने बात की कि उन्होंने अपना बिटकॉइन स्पॉट ETF के लिए फाइल किया है, बिल्कुल उसकी तरफ से या उसकी वजह से ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ा है और जो बिटकॉइन का प्राइस है वो ऊपर गया है। इसके साथ ही जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन ने की रेजिस्टेंस जोन को एंटर कर लिया है और आने वाले हफ्तों में $32,500 के ऊपर भी इसका प्राइस जा सकता है। Okay, moving on. The UK's Financial Services and Markets Bill, a proposed legislation that touches upon traditional monetary services and cryptocurrencies, has moved forward after the Parliament's upper chamber, the House of Lords, gave its nod. It will now enter into final reading where the House of Commons is authorized to make amendments. The legislation can go back and forth before the two chambers of the Parliament reach a full agreement. The approval from the House of Lords means the bill will now enter into final stage, consideration of amendments and royal assent. This is the final reading where both chambers of the Parliament can discuss any changes. Once they shake hands on a final agreement, the decree will need a signature from King Charles III to become official. तो यहाँ लगता है कि यूरोपियन यूनियन के बाद एक और हम क्रिप्टो बिल ऑलमोस्ट फाइनलाइज होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने नोट दे दी है। अब अपने फाइनल स्टेज पे ये बिल जो है वो पहुंच गया है। तो पार्लियामेंट के अगर दोनों चेंबर्स जो हैं अगर कुछ चेंजेस करनी है, कोई अमेंडमेंट्स करनी है, वो करने के बाद जब वंस दे आर ओके विद द बिल वो अपना हामी उस पर भरते हैं, तो फिर फाइनल जो स्टेज है वो यही है कि किंग चार्ल्स III जो है उस डिक्री को साइन कर देंगे और बिल पास हो जाएगा। एंड आई थिंक उसके साथ एक और नाम जुड़ जाएगा उस लिस्ट में जहाँ पे अब क्रिप्टो बिल्स जो हैं वो पास हो रहे हैं और कुछ जैसे कंट्रीज़ हैं या नेशंस हैं वो क्रिप्टो को लेकर अपने रेगुलेशंस
फाइनल कर रही है. जी, true. Moving on, as market excitement about the potential of artificial intelligence has helped lift the technology giant to a record market value of $2.59 trillion, Microsoft Corp shares rose to a fresh record high close on Thursday. On Thursday, Microsoft shares increased 3.2% to close at $348.10 a share. The stock, which has increased by over 45% so far this year, hit its previous record close of $343.11 on November 19, 2021. On November 22, 2021, the stock's intraday record high was $349.67. Additionally, on Thursday, shares of Apple closed at a record high of $186.01, while those of the manufacturer of graphics chips, Nvidia, hit a brand new intraday record of $432.89. तो AI की वजह से काफ़ी जो टेक जायंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है. जैसे हमने पहले देखा, जो एनविडिया है, जो एक चिप मेकर कंपनी है, उसने $1 ट्रिलियन के मार्क को टच किया, और उसके बाद फिर एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट सभी को इससे फ़ायदा मिल रहा है. और अब रिसेंटली थर्सडे को ही जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का भी जो शेयर है वो ऊपर गया 3.2%, और इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अराउंड $2.5 ट्रिलियन हो गई. तो आई थिंक AI की वजह से काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा इनके जो प्राइस है इन्हें भी एक अच्छी तरह से ये बढ़ रहे हैं. बिल्कुल. Moving on, Decentraland, the popular browser-based 3D virtual world on-chain platform, has teamed up with Polygon Labs, the startup behind an Ethereum scaling solution network, to stage their annual non-fungible token music festival in the Metaverse. Polygon Labs, a digital asset incubation studio, revealed ready intentions to conduct its annual music event this Saturday in a June 16th web publication. This week, Polygon Labs has joined with Decentraland to present the NFT music event in the Metaverse. The highly anticipated musical festival will bring together more than 15 Metaverse music producers and musicians, connecting them with more than 5 million Metaverse users worldwide. तो यहाँ पे Decentraland और Polygon Labs मिलकर जो है NFT म्यूज़िक फेस्टिवल लेकर आ रहे हैं. मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं ये BAYC जो है, बोर्ड एप यॉट क्लब का जो एक मेंबरशिप है, उसको देखकर कहीं ना कहीं ये मूव ली गई है, क्योंकि BAYC की मेंबरशिप में एक की इवेंट जो है वो उनका कॉन्सर्ट, उनके म्यूज़िक फेस्टिवल्स रहते हैं, क्योंकि उससे क्या है ना, फ़ैन एंगेजमेंट बढ़ती है, उनका रेवेन्यू बढ़ता है, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है. BAYC टोकन्स जो हैं उनमें हम एक देखते हैं कि उसमें भी तेज़ी आती है. तो ये सब फ़ायदे हमेशा मिलते हैं. आई थिंक वहीं से ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हुए अब Decentraland और Polygon Labs पे जो है NFT म्यूज़िक फेस्टिवल लेकर आ रहे हैं. एंड इसमें जैसे कि हमने बात की 15 मेटावर्स म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होंगे, म्यूजिशियंस होंगे, और वो 5 मिलियन मेटावर्स यूजर्स से कनेक्ट करेंगे. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग इवेंट. आई थिंक अब फैशन वीक से आगे बढ़कर NFT म्यूजिक फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं लाइन में, along with beauty events. बिल्कुल. Moving on, a digital art collection originally owned by the defunct cryptocurrency hedge firm Three Arrows Capital has fetched about $11 million at Sotheby's in New York, setting a new auction record for works sold as non-fungible tokens amid a general decline in demand for comparable assets. Among the 37 artworks available for purchase with Bitcoin were Dmitry Cherniak's Ringers #879, also known as the Goose. It sold for $6.2 million to enthusiasts Punk 6529, making it the second most valuable work of generative art ever sold, behind another of his creations, according to the auction house. The transaction comes only weeks after Sotheby's received $2.5 million for a smaller batch of NFTs owned by Three Arrows, which declared bankruptcy in the United States in July after crypto exchange Deribit claimed it owed it $80 million. According to the Financial Times, the formerly Singapore-based fund owes creditors more than $3 billion. तो Three Arrows Capital, जो कि 2022 में जो कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस के उससे गए निकला है, और अब देखा जाए तो NFTs ने भी 2021 में बूम किया, लेकिन फिर माना गया कि इसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा NFT मार्केट पर भी पड़ा, क्योंकि जैसे क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऊपर नीचे जाता है तो उससे भी NFTs पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है. तो इसके साथ ही अब हम देखें तो Three Arrows Capital की जो एक आर्ट गैलरी है, जो उसकी एक ऑक्शन है, वो सदबीज़ के एक ऑक्शन हाउस में न्यूयॉर्क में, उसका एक डिजिटल आर्ट जो है वो $11 मिलियन में सेल हुआ, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है आई थिंक NFT मार्केट के लिए भी और Three Arrows कैपिटल के लिए भी.
तो उसी में सबसे बड़ा जो था वो 6.2 मिलियन डॉलर दिमित्री चेरनियाक का द गूस उनका आर्टवर्क था, जिसपे कि लगभग लगाया जाता है कि 2 से 3 मिलियन में वो बिकेगा वो आर्टवर्क, लेकिन उनकी उम्मीद से बढ़कर 6.2 मिलियन में वो आर्ट बिका। एंड तो ये सेकेंड एक्चुअली सदबीज जो है वो 3 एरो कैपिटल की जितने भी NFT आर्टवर्क था उसकी नीलामी करी, उसको ऑक्शन कर रही है इन इंस्टॉलमेंट्स। तो पहला इंस्टॉलमेंट भी जून में ही हुआ था और वो, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं था। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट में इसमें एक अच्छा इन्होंने सक्सेस देखा है ऑक्शन प्राइसेस में। So moving on, bankrupt Bitcoin miner Core Scientific filed its Chapter 11 bankruptcy plan. The plan was filed in the United States Bankruptcy Court for the Southern District of Texas Houston Division. The plan was negotiated with key stakeholders, and according to the filing, the firm is seeking to build as much consensus as possible about how a new Core Scientific would look after emerging from its bankruptcy proceedings. The company said it had seen a boost in liquidity since filing for Chapter 11 bankruptcy and is focused on revamping its business plan to make a successful comeback. The company attributed its improved financial performance to higher Bitcoin prices, increased network hash rate, and reduced energy cost. A Chapter 11 bankruptcy allows a firm to continue operating until stakeholders agree on a restructuring plan, which could involve measures such as downsizing business operations to reduce debt or liquidating asset to repay creditors. Core Scientific filed for bankruptcy on December 21st, 2022 due to falling revenue amid low BTC prices. तो Core Scientific ने जैसे लास्ट ईयर बैंक्रप्सी फाइल की, लेकिन उनका कहना है कि बैंक्रप्सी फाइल करने के बाद से उन्होंने जो है अपनी लिक्विडिटी में बूस्ट देखा, इसीलिए उन्होंने अभी रिसेंटली चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया, जिसमें होता ये है कि आप एकदम से अपने ऑपरेशंस बंद नहीं करते हैं, वाइल ऑपरेटिंग आप जो है अपने क्रेडिटर्स के जो भी डेट्स हैं वो आप देना क्लियर करते रहते हैं। सो इट बेसिकली चैप्टर 11 बैंक्रप्सी बाइज यू टाइम टू पे ऑफ योर क्रेडिटर्स, और साथ ही साथ आप अपने बिजनेस प्लान पर भी वर्क करते हैं कि कैसे आप, जैसे कि अब कोर साइंटिफिक को लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव वो मूव्स देख रहे हैं, जैसे ना कि जैसे कहते हैं उनकी लिक्विडिटी बूस्ट हो रही है, और उसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं कि बिटकॉइन के प्राइसेस बढ़े हैं, हैश रेट इंप्रूव हुआ है, एनर्जी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो अब वो एक अच्छा ठोस प्लान बना रहे हैं अपने कमबैक का, और होपफुली दे आर प्लानिंग कि इससे वो अपने डेटर्स जो हैं, मतलब क्रेडिटर्स जो हैं, उनको रीपे कर पाएंगे। Moving on. German automaker Mercedes-Benz announced Thursday that it will add OpenAI's ChatGPT chatbot to its cars via a beta program for the Mercedes-Benz user experience feature in its vehicles, enabling AI-driven voice commands and additional functionality. The beta will begin on Friday, June 16 and run for 3 months. Drivers looking to join the beta simply need to ask their car about it to get started. The initiative will be limited to the United States market. Mercedes-Benz said that the popular chatbot is coming to its cars via the Microsoft Azure OpenAI service launched by the tech giant in March. While the addition of ChatGPT is new, the MPUX voice assistant and its Hey Mercedes feature launched in 2018 on the Mercedes-Benz A-Class. तो यहाँ पे यूएस मार्केट के लिए मर्सिडीज बेंज जो एक बहुत ही अच्छा फीचर लेके आ रहा है, तो हर तरफ एआई की ही बातचीत हो रही है। तो अब उनकी जो कार्स हैं उनमें एआई ड्रिवन वॉइस कमांड्स यूज़ होंगी, और जो ड्राइवर होगा उसे बस ये बोलना है, क्योंकि ये बीटा प्रोग्राम के थ्रू होंगी जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का एक फंक्शन है, तो उनको सिर्फ ये बोलना है कि हे बीटा, और आगे से वो जो AI वॉइस कमांड है वो उनसे बातचीत करेगी। तो who doesn't like a walking talking car? I think सभी बहुत excited होंगे इस अपडेट के लिए। जी। So that's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0TV, and for more updates log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. Have a great weekend.